So guys, in previous class, we are already discussed about the DOS attack and the DDoS attack, that is a ping of that attack with the sending of different ICMP packet on the target machine. And we are already checked कि किस टाइप की एक्टिविटीज होती हैं on the target machine अगर DDoS attack या DOS attack हम करते हैं, right? So ये केवल हमने जो किया था वो टारगेट मशीन के ऊपर किया था। अगर आप किसी टारगेट सर्वर लेके चलते हो, कोई भी वेब एप्लीकेशन है, अगर आप उसके ऊपर, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, हम जो कर रहे हैं दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड कर रहे हैं, है ना, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर अगर डीडोस अटैक होता है तो उस केस में आप चेक कैसे करोगे कि वो वेबसाइट जो है वो आपकी विजिबल है अभी भी या उसके थ्रू वो इफेक्ट हो चुकी है। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे दो लिंक है, इज इट डाउन डॉट अस, तो आप इसका यूज कर सकते हो। इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि वेबसाइट जो है वो अभी अवेलेबल है या वो कम्प्लीटली क्लोज हो चुकी है, डाउन हो चुकी है ना। तो यहाँ पे जाके आप कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकते हो। लेट अस सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू सर्च दैट इज www.google.com एंड जस्ट क्लिक टू इज इट डाउन। तो क्वेश्चन है इज इट डाउन, तो ये चेक कर रहा है, ये पैकेट सेंड करेगा। पैकेट सेंड के बाद अगर वहां से रिस्पॉन्स आ जाता है तो ये आपको बता देगा कि दिस वेबसाइट इज नॉट डाउन। अगर ये पैकेट सेंड करता है और रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ये आपको बताएगा कि दिस वेबसाइट इज बेसिकली गोइंग टू डाउन, राइट? ठीक है। अब इसी तरीके से एक और वेबसाइट है इज इट डाउन राइट नाउ .com करके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वेबसाइट। तो आप इसका यूज कर सकते हो। Like let us suppose I'm just going to write www.crawsecurity.com and just click to check। तो आप क्लिक करोगे चेक पे तो ये चेक कर रहा है, भाई पैकेट सेंड करेगा, वेट करेगा रिस्पॉन्स का। अगर रिस्पॉन्स आता है देन इट विल शो यू कि हाँ ये वेबसाइट क्या है अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है crawsecurity.com इज अप एंड रीचेबल बाय अस, यानी कि आप इसके अपने थ्रू ये रीचेबल कर सकता है, उसे एक्सेस कर सकता है। एंड crawsecurity.com इज अप है, अभी एक्टिव है वेबसाइट। ठीक है। तो अगर कोई भी इश्यूज क्रिएट होते हैं, आपको दिख रहा है लाइक ये वेबसाइट डाउन है और तब भी ये गलत बताया, तो आप रिपोर्ट एंड इशू कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। इस तरीके की एक्टिविटी आप दिखा सकते हो, यहाँ पे कमेंट्स डाल सकते हो, आपके ऊपर है। तो आप चेक कर सकते हो कि वो वेबसाइट जो है आपकी वो एक्टिव है अभी भी, या आपने जो डॉस अटैकर ने किया उसकी वजह से वो डाउन हो गई। ठीक है। तो ये थे हमारे पास चेक करने के प्रोसीजर कि हम किस तरीके चेक करते हैं कि वेबसाइट ओपन है या नहीं है। ठीक है। नाउ let's come to the defending part of the DDoS attack as well as the DDoS attack। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑन द इन्वेस्टिगेटर्स पार्ट कि अगर कोई भी डॉस अटैक आपके सिस्टम के ऊपर होता है या आपके मशीन के ऊपर या आपके पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर होता है इन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसमें किस तरीके से पता लगाओगे और वहां पे आप किस तरीके से उसे सेव कर सकते हो। ठीक है। सो इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि डिफेंडिंग अगेंस्ट अ डीओएस अटैक की अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन पार्ट, द थ्रेट ऑफ बीइंग टारगेटेड बाय द डॉस अटैक हैव लीड many major online services to implement various strategies for handling overwhelming flood of data or a traffic। तो यहाँ पे क्या है कि हम डेटा पैकेट के फ्लड को रोका जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है, या फिर उस पर वेरियस स्ट्रेटजीज को यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। तो कौन कौन से टेक्निक्स हैं? दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ टेक्निक, सम ऑफ द एंटी डीओएस टेक्निक्स के अंदर सबसे पहला है ट्रैफिक एनालिसिस एंड फिल्टरिंग पार्ट। सेकंड है श्रिंक होलिंग, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्लैक होलिंग पार्ट। एंड द थर्ड वन दैट इज आईपी बेस्ड प्रिवेंशन। ठीक है। तो 3 तरीके होते हैं कि आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, प्रिवेंशन पार्ट में हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है दैट इज ट्रैफिक एनालिसिस एंड फिल्टरिंग पार्ट। तो ट्रैफिक एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड द डेटा दैट इज स्ट्रीमिंग थ्रू व्हेन थ्रू देम विद इन अ नेटवर्क। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग प्रोसीजर यूज करते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के, जिसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि नेटवर्क के ऊपर कौन से प्रोटोकॉल्स पे ज्यादा पैकेट ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है। तो इफ यू रिमेम्बर दैट जो हमने कल करा था वहां पे, जब हमने बादशाह को ओपन करके उसको अपनी प्रीवियस क्लास में कैप्चरिंग करने की कोशिश करी थी और कैप्चर हुए भी थे पैकेट हमारे, और उसमें हमने एनालाइज किया था कि किस पोर्ट पे हमारे ज्यादा पैकेट जा रहे हैं प्लस किस आईपी एड्रेस पे हमारे पैकेट की जो फिल्टरिंग है वो ज्यादा हो रही है ना, यानी फ्लडिंग किस पे ज्यादा है।
तो जब मुझे पता चला था फ्लड उस पे जा रहा है, तो मुझे वहां से आईपी एड्रेस पता चल रहा था। तो उस केस में हम एनालिसिस यानी ट्रैफिक एनालिसिस को क्या करते हैं, फिल्टर करके पता कर सकते हैं कि किसके ऊपर हमारे पैकेट्स जा रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर वी ऑलरेडी यूज्ड, राइट? है ना? तो हम कल इसको कर चुके हैं, बिल्कुल। अब नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज द स्ट्रिंग होलिंग। स्ट्रिंग होलिंग के अंदर क्या होता है? अच्छा, इसके लिए जो बेस्ट टूल है कॉर्पोरेट लेवल टूल, वो आपका यूज होता है वायरशार्क। तो याद रखना, आप अगर कभी भी पैकेट फिल्टरिंग आपको करना है या फिर आपको ट्रैफिक एनालिसिस चेक करना है, तो यू जस्ट यूज अ वायरशार्क टूल। Wireshark is very a good tool for capturing all the packet which is basically traveling in a network, and वहां से आप पता कर सकते हो कि कौन से पैकेट कितने ज्यादा जा रहे हैं और कितनी उनकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्ट्रिंग कॉलिंग। नाउ व्हाट अबाउट द स्ट्रिंग कॉलिंग? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग कॉलिंग इज द रीडायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डेस्टिनेशन टू वन स्पेसिफाइड बाय द स्ट्रिंग होल ओनर। यहाँ पे क्या होता है स्ट्रिंग कॉलिंग के अंदर कि हम रीडायरेक्शन प्रोसीजर्स का यूज करते हैं। रीडायरेक्शन मतलब जो ट्रैफिक आपकी ओरिजिनल वेबसाइट पे आना चाहिए था, वो ओरिजिनल सर्वर पे ना जाके किसी अनदर सर्वर पे स्विच हो जाता है। ठीक है, जिसको हम रीडायरेक्ट प्रोसीजर यूज करते हैं। जितने लाइक हमने वहां पे सेट किया कि दे अल्टर डेस्टिनेशन इज नोन एज द स्ट्रिंग होल, द मेन the name is a reference or the physical shrink hole into which items apparently disappear. Shrink hole can be used for good or ill intent. अब देखो होता क्या है कि जैसे कि आपने सेट कर रखा है कि इसके ऊपर लाइक 65,535 पैकेट्स ही आने चाहिए। अगर उससे ज्यादा पैकेट जैसे ही बढ़ने स्टार्ट होते हैं या उस रेंज तक जाते हैं, तो हमने वहां पे रीडायरेक्शन यूज कर रखा है कंडीशन के साथ। अगर इससे ज्यादा पैकेट आएंगे तो वो किसमें मूव कर जाएगा? दूसरे यानी कि श्रिंक होल यानी कि ब्लैक होल की तरफ वो सारे पैकेट जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपको कोई एक बेटर पर्सन भी है और उस केस में वो भी एक्सेस कर रहा है वेबसाइट, तो वो भी उस वेबसाइट को इजीली एक्सेस नहीं कर पाता है, बिकॉज सारे पैकेट जो है वो आपके किसमें जाने लगते हैं? श्रिंक होल में जाने लगते हैं। ठीक है, तो उस केस के लिए लेट्स सी ए स्मॉल वीडियो सो वी विल इजीली अंडरस्टैंड द स्ट्रिंग होलिंग प्रोसीजर आपका किस तरीके से काम करता है। The internet is becoming a bigger target than ever for attacks. Think about the impact. Every aspect of your day, from online banking to your business activities to shopping or simply staying connected, becomes vulnerable. Experts agree cyber attacks will continue to strike at a faster pace and with greater impact every time. A single attack can dramatically slow down the entire internet. In fact, for just a few dollars, cyber criminals can launch what's called a DDoS attack, or Distributed Denial of Service. DDoS is a complicated term for what is essentially a tsunami of unwanted internet data. By commandeering more than one computer system, which refers to the distributed part, a DDoS attack sends a tsunami of data through the internet, which subsequently overwhelms the resources of the target. The attack can knock out a website or even a data center for days. This is where a technology called black holing comes in. It isolates and contains the attack. Black holing is a way to redirect the unwanted internet data away from a target. The unwanted internet data is marked and blocked so that it never reaches the intended destination. This unwanted internet data is then captured and dropped from the network into oblivion, or the black hole. Black holing is critical in stopping the flow of unwanted internet data. But where does black holing take place? Black holing takes place within internet exchanges. Massive amounts of internet data transits through internet exchanges, passing from one internet service provider to another. Internet service providers use internet exchanges for what is called peering. Peering is an agreement between these internet service providers, or ISPs, to exchange internet data on their networks.
Peering presents many benefits for ISPs, including improving the efficiency and performance of internet data flows, because at an internet exchange, more internet data flows can be protected from DDoS attacks in fewer locations, and attacks can be stopped closer to the source. What does that mean for you? A smarter, faster, and safer internet. Always on, always secure, and ready when you are. सर में आया ब्लैक होलिंग किस तरीके से काम करती है? यस सर। बढ़िया। सो अब ये जो आपका प्रोटेक्शन पार्ट है, इसको आप नेटवर्क के ऊपर किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हो, उसके लिए आपके राउटर के अंदर भी एक सेटिंग होती है, ठीक है? तो अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर हो तो यू नीड टू नो अबाउट दिस थिंग कि आप राउटर्स की बेसिस पे इन पैकेट्स को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। लाइक मैंने आपसे कहा ना कि एक लिमिटेशन आपने लगा दी कि इतने पैकेट आने चाहिए, अगर इससे ज्यादा आए तो वो सारे किस में जाने लगेंगे, श्रिंक होल में जाने लगेंगे, है ना? तो उसके लिए एक वीडियो है जिससे आपको पता चलेगा राउटर में किस तरीके से कहाँ पे हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। Hey there, I'm Natasha, and my specialty is making all your app building dreams come true. Or DDoS protection. All right, so as you remember in my Xerxes videos and other DDoS videos, I talked about the fact that you can actually block the ICMP pings, etc., and most of you thought that I was lying or there isn't something like that. So this is a video in response to that, and for those of you who are asking me how to do it, this video is also for you. So as you can see, I've actually logged into my router here, the router control panel, and there's not going to be anything serious here because again it is a subnet based system. So in terms of IP addresses, I don't want people coming telling me that I saw your IP address and I'm going to DDoS you. That just doesn't work anymore. So if I just go to the security and I go to advanced security, you can see that I have something called DOS protection. Now, for those of you who are actually calling me out and telling me there isn't something like this, what do you have to say about this? All right, so if you just read on the right here where you have your help or your documentation, you can see that it allows you to enable or disable the DOS protection function. When it's enabled, the flood filters will be enabled. So again, you have your ICMP flood attack filtering. So what this means is once you enable this, performing a DDoS or DDoS attack will not take down your internet connection in the sense that it will block the ICMP floods. And when you're talking about, for example, stuff like the TCP synchronized headers for the packets, you cannot enable that. So depending on the type of DOS or DDoS attack you're trying to perform, if you have a good access point or a modern router, I would say it should have this. Now, I'm not sure if your router doesn't have this security protocol or security feature, you might be looking at, selecting a new one if this is what you're really up to or what you intend to do. So by default, you can enable the DOS protection, and then you can finally enable the type of packets you'll be sending. So you have your user datagram protocol, UDP, ICMP, TCP, the synchronized flood attacks, which is very, very powerful as well. You can increase the threshold depending on what you've set so that, there's no packet loss. And then you can also forbid the ping packets from the WAN port and the LAN port. So again, you can forbid it from affecting other computers on your network. All right, but I don't perform DOS attacks or DDoS attacks for that matter. So again, I don't need to enable it. But this is the way to do it. And for those of you who are calling me out, I hope you can see that it is real. If you're telling me that Xerxes doesn't work, it does work. You just need to know what you're doing with your router, and you need to understand the flow of packets. So again, this is a short video, and I just wanted to clear things up. Don't worry, uploads will be regular now, and the web penetration testing video should come straight after this. Anyway, as I said that. So guys, समझ में आया? सर हल्की से समझ आए सर। क्या चीज? थोड़ा सा समझ में आया, मतलब 100 में से 60 पकड़ लो सर, उतना ही समझ में आया।
कोई नहीं, आप इसको एक बार दोबारा देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप अपने राउटर में जाके सेटिंग के अंदर चेक कर सकते हो, सिक्योरिटी में जाना, एडवांस सिक्योरिटी में जाना, वहां पे आपके पास पैकेट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो दे रखा है कि आईसीएमपी फ्लड पैकेट थ्रेशोल्ड दे रखे हैं 5 से लेके 3600 तक, है ना, पैकेट पर सेकंड। एक सेकंड में कितने पैकेट रिसीव होने चाहिए ये यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे इसने क्या सेट कर रखा है, 50, यानी एक सेकंड में कितने पैकेट हो सकते हैं आपके, 50 पैकेट पर सेकंड रिसीव कर सकता है। अगर इससे ज्यादा आएंगे तो ये इनेबल कर देगा। तो आईसीएमपी का इनेबल है फ्लडिंग अटैक, तो एक सेकंड में 50 से ज्यादा पैकेट नहीं रिसीव करेगा वो। ठीक है, दूसरा इनेबल यूडीपी फ्लड अटैक फिल्टरिंग यहाँ पे सेट है, तो उसमें भी सेम चीज है। अगर यूडीपी पैकेट आ रहे हैं, कोई बंदा यूडीपी पैकेट सेंड कर रहा है, तो उस केस में भी यहाँ पे सेट किए जा सकते हैं। जैसे ने 500 एरिया 500 पैकेट पर सेकंड आ रहा है, दैट्स गुड। नॉर्मल अगर हम वीडियो कॉल्स करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इतने ही जाते हैं, तो ठीक है, जा रहे हैं तो दैट्स गुड। अगर इससे ज्यादा गए तो वो क्या करेगा, इनेबल कर देंगे हम इसे, और उसके बाद क्या होगा, 500 से ज्यादा पर सेकंड आएंगे तो इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट इनेबल टीसीपी सिंक्रोनाइजेशन फ्लड अटैक फिल्टरिंग। तो अगर हम फिल्टरिंग प्रोसीजर यहाँ पे करते हैं, टीसीपी सिंक्रोनाइजेशन फ्लडिंग पैकेट थ्रेशोल्ड, तो यहाँ पे देखो टीसीपी सिंक्रोनाइजेशन फ्लड जो हमने उस समय अटैक किया था, अब आप लोग को याद हो हमने यही वाला किया था, टीसीपी सिंक्रोनाइजेशन फ्लड, है ना। तो उस केस में हमने आईसीएमपी वाला भी किया है, ये वाला भी किया है। तो दोनों में क्या है, इसमें 50 पर सेकंड एरिया, अगर 50 से ज्यादा आएंगे तो उस केस में ये क्या करेगा, बाकियों को ब्लॉक कर देगा। नेक्स्ट क्या है, फॉरबिडन पिंग पैकेट फॉर द वैन पोर्ट। अगर कोई अनदर पिंग आती है, पैकेट्स आते हैं इनेबल ऑप्शन डीओएस प्रोटेक्शन, और अगर सेम के अंदर आती है तो भी काम करे, तो ये आपको सेट करना पड़ेगा। देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको सेव कर दोगे सेटिंग को, एंड उसके बाद क्या होगी, ये इनेबल हो जाएगा और सारी जितने भी सेट है, जो जो पैकेट्स हमने सेट किए हैं वो आपको रोकेंगे अनवांटेड मैलिशियस पैकेट्स को आने से। क्लियर है, अब समझ में आया सही? यस सर। हेलो। हाँ जी, अब आ गया समझ में? हाँ सर, हाँ सर। बढ़िया। सो ये था आपका कि हम राउटर्स के अंदर किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी डिफरेंट टाइप्स के वैफ भी गाइस यूज करे जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। जो स्ट्रिंग कॉलिंग है, एक तरीके का वैफ सिस्टम ही आपको प्रोवाइड करके देता है, जो कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं। जैसे कि आपने क्लाउडफेयर का नाम सुना होगा, या फिर आपने फोर्टीनेट की फोर्टीगेट का नाम सुना होगा, है ना। तो ये सारे क्या है, वैफ है। सिस्को के भी अमेजोन वैफ्स आते हैं, है ना। वो सारे क्या है, वैफ सिस्टम है। एडब्ल्यूएस के अमेजोन वैफ आता है, तो वो आपको देता है। सिस्को के भी अलग वैफ आते हैं। ओके, सो हम इनका भी डिटेक्शन कर सकते हैं, इनको भी पता लगाया जा सकता है, तो वो भी पार्ट होता है आपका, जो कि हम इससे क्या कहते हैं, अलग अलग टाइप से परफॉर्म करते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है आईपी बेस्ड प्रिवेंशन। अब देखो आईपी बेस्ड प्रिवेंशन क्या होता है। आईपी बेस्ड प्रिवेंशन के अंदर एन इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन सिस्टम आईपीएस is a form of network security that works to detect and prevent identified threats. Institution prevention system continuously monitor your network and looking for possible malicious incidents and capturing information about them. तो दिस इज कॉल्ड आईपी बेस्ड प्रिवेंशन। अब आपने फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रखी है आप लोगों ने? सॉरी सर। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रखी है कि फायरवॉल के अंदर रूल सेट कैसे बनाते हैं? नहीं सर। नहीं पढ़ी है? मैंने क्या हुआ है सर? किया है, बढ़िया। सो यहाँ पे फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपके पास दो मेथड होते हैं, एक आईडीएस और एक आईपीएस। आईपीएस जो है बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर काम करता है, और ये इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है। जब भी कोई मैलवेयर डिटेक्ट होता है आईडीएस के थ्रू, तो उसको, या अनवांटेड पैकेट डिटेक्ट होते हैं आईडीएस के थ्रू, तो उनसे आपके कंप्यूटर को या आपके नेटवर्क को सिक्योर रखना, कुछ टाइम तक रोक के रखना, ये किसका काम है? आईपीएस का काम है। दैट इज ए इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन सिस्टम का काम है। ठीक है, ये ऑल पॉसिबल मैलिशियस इंसिडेंट्स एंड कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, और उसे कैप्चर करके इंफॉर्मेशन बताता है कि आपकी क्या क्या पैकेट आ रहे हो, और आप उसको किस तरीके से सिक्योर रख सकते हो। ठीक है, अपने नेटवर्क को कैसे सिक्योर कर सकते हो। क्लियर? तो इसके लिए हम इसमें एक और पार्ट भी करेंगे। मैंने आपको टॉपिक्स दिखाए थे ना कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इसमें।
Yes, sir. है ना। उसमें एक और चीज मैंने इंक्लूड करी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइक प्रिवेंशन सिस्टम में। तो प्रिवेंशन में हम यहाँ पे एक फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशंस और ऐड कर दिए मैंने, तो फायरवॉल्स टॉपिक भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, ये था आपका पूरा पार्ट जो कि DOS का था, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का, जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन पार्ट में उसको ट्रैफिक एनालिसिस की हेल्प से, श्रिंक होल की हेल्प से और IPS की हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एंड अटैक होने से बचा सकते हैं, ठीक है। सो मैंने इसके नोट्स आपको कल ही शेयर कर दिए थे। अब हम आगे का अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द फायरवॉल, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन सिस्टम को पूरा कन्फिगर करेंगे, देखेंगे किस तरीके से यूज करना है। आप उसमें इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर अगर कोई भी पैकेट्स आपके इस तरीके के होते हैं तो आप उनको कैसे वहां पे डिटेक्ट कर सकते हो और कैसे उनको ब्लॉक कर सकते हो। अब जैसे कि मल्टीपल पैकेट्स तो आ रहे हैं लेकिन उनको ब्लॉक भी तो करना पड़ सकता है। हो सकता है आप नहीं चाहते पर्टिकुलर कि ये पैकेट, ये आईपी बहुत ज्यादा स्विच कर रही है, बार बार अटैक कर रही है, तो मैं आईपी ब्लॉक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ इस पोर्ट पे पैकेट सेंड हो रहे हैं बार बार, तो मैं पोर्ट ही ब्लॉक कर देता हूँ कि उस पोर्ट पे अब पैकेट आएंगे नहीं, समझ रहे हो। तो वो कैसे होगा, वो होगा आपका फायरवॉल के थ्रू, यानी कि IDS एंड IPS के थ्रू। तो वो हम अब करेंगे अपना पार्ट। प्लस उसी में एक चीज और हम पढ़ेंगे, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द हनी पॉट्स। तो इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है हनी पॉट्स का। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपके जो अटैकर्स होते हैं, जब आपके नेटवर्क के ऊपर ज्यादा से अटैक कर रहे हैं, बार बार अटैक कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी इवन एंड कंपनीज इस प्रोसीजर का यूज भी करती हैं अटैकर्स को ट्रैप करने के लिए। डिफरेंट अटैकर्स अगर ज्यादा अटैक करते हैं तो उनको ट्रैप करने के लिए कंपनीज हनी पॉट प्रोसीजर का यूज करती हैं, जिनके बेसिस पे उन अटैकर्स को ट्रैप किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, ठीक है। सो ये पार्ट करना कैसे, लेट्स मूव टू दैट पार्ट। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। So guys, this is our next topic and the topic name is Introduction to Firewall and the IDS and IPS system, ठीक है। कि आपकी फायरवॉल क्या होती है, IDS एंड IPS कैसा होता है और इसको किस तरीके से हम एज ए प्रोटेक्शन पार्ट यूज करते हैं इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टू सिक्योर द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को किस तरीके से सिक्योर रखना है, ये आप कवर करोगे अपने फायरवॉल सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द फायरवॉल, कि फायरवॉल होती क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले फायरवॉल है क्या। A firewall is a component which is used to filter the incoming and outgoing or inbound and outbound rules of a particular network. फायरवॉल एक टाइप का कंपोनेंट सिस्टम है, एक टेक्निक, एक कंपोनेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, फिल्टर्स लगाते हैं किस पे, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट्स के ऊपर, जिसमें हम रूल सेट बनाते हैं इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स, किसके ऊपर, नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। A firewall is having a database of signatures for the data packets moving inside and outside the network. फायरवॉल के पास एक डेटाबेस होता है सिग्नेचर्स का, जिसमें डेटा पैकेट जो आ रहे हैं या जो जा रहे हैं इन द नेटवर्क, उनको ये चेक करता है। The data packets moving in a network traffic having a malicious content can be blocked by a firewall according to the rules set created by a network administrator. जो डेटा पैकेट आपके मूव कर रहे हैं किसके अंदर, आपके नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर या कम्युनिकेशन चैनल के अंदर, उनमें जो भी मैलिशियस पैकेट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है फायरवॉल के थ्रू। लेकिन कब करते हैं, अगर वो रूल सेट आपका डिजाइन किया गया है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। तो अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने उस रूल सेट को डिजाइन किया है, देन उस केस में आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, किसमें, फायरवॉल का यूज करके, ठीक है। सो फर्स्टली हम ये समझते हैं कि फायरवॉल होती क्या है, किस तरीके से चलती है, ठीक है। तो जस्ट सी ए स्मॉल वीडियो सो वी विल अगेन इजीली अंडरस्टैंड कि फायरवॉल आपकी किस तरीके से काम करती है। Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business hosts. What is a firewall?
Now, a firewall is a system that is designed to prevent unauthorized access from entering a private network by filtering the information that comes in from the internet. A firewall blocks unwanted traffic and permits wanted traffic. So a firewall's purpose is to create a safety barrier between a private network and the public internet. Because out on the internet, there's always going to be hackers and malicious traffic that may try to penetrate into a private network to cause harm. And a firewall is the main component on a network to prevent this. And a firewall is especially important to a large organization that has a lot of computers and servers in them, because you don't want all those devices accessible to everyone on the internet where a hacker can come in and totally disrupt that organization. So that's why you need a firewall to protect them. So a firewall that's used in computer networks is very similar to how a firewall works in a building structure. In fact, that is where the word firewall came from. A firewall in a building structure provides a barrier so that in the event of an actual fire on either side of the building, the firewall is there to keep the fire contained and to keep it from spreading over to the other side. So the firewall is there to keep the fire from destroying the entire building. But if the firewall wasn't here, the fire would spread over to the other side, and then the whole building would be destroyed. And a network firewall works in a similar way as a structure firewall. It stops harmful activity before it can spread into the other side of the firewall and cause harm to a private network. So in today's high-tech world, a firewall is essential to every home, and especially in a business or an organization, to keep their network safe. Now, a firewall works by filtering the incoming network data and determines by its rules if it's allowed to enter a network. And these rules are also known as an access control list. These rules are customizable and are determined by the network administrator. The administrator decides not only what can enter a network, but also what can leave a network. So these rules either allows or denies permission. So as an example here, we have some rules in a firewall's access control list, and it shows a list of IP addresses that have been allowed or denied by this firewall. And as you can see, traffic from some IP addresses are allowed to enter this network, but traffic from one IP address has been denied. So if traffic from this IP address tried to get into this network, the firewall will deny it because of the rules that are set in the firewall. But the other IP addresses are granted access because the rules allow them. Now, firewalls don't just make rules based on IP addresses, but they can also make rules based on domain names, protocols, programs, ports, and keywords. So let's say in this example, the firewall rules are controlling access by port numbers. And let's say that the rules have allowed incoming data that's using port number 80, 25, and 110, and the data using those ports have been given access to this network. So any incoming data that's using those ports can pass through the firewall. But also in this firewall, the rules have denied any data that's using port numbers 23 and 3389. So any incoming data that's using those port numbers, the firewall will deny access and it won't get past the firewall. So in a nutshell, this is how firewalls basically work. Now, firewalls do come in different types, and one type is called a host-based firewall, and this is a software firewall. This is the kind. Now, अभी तक इतना समझ में आया guys? Yes, sir. अब सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स की, ठीक है? तो अगर हम टाइप्स ऑफ फायरवॉल की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके की फायरवॉल होती हैं. सबसे पहली होती है दैट इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, जिसे बोलते हैं होस्ट बेस्ड फायरवॉल, ठीक है? तो ये क्या है? These are the firewall which is in the form of application or a software which is having a rule set of inbound and outbound traffic coming from the network, like Windows firewall हो सकती है, Linux firewall हो सकती है, या IP tables हो सकती है उसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि जो हम एक्सेस कंट्रोल एक्सेस लिस्ट जो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, उस केस में हम जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, उसको हम बोलते हैं होस्ट बेस्ड फायरवॉल, ठीक है? जिसके अंदर इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल सेट आपके डिजाइंड होते हैं. लाइक किस तरीके से, जैसा आप यहाँ पे जाके नॉर्मली फायरवॉल सर्च करोगे तो आपको फायरवॉल मिलेगा. जस्ट ओपन द फायरवॉल.
And now look at here, these are the inbound rule set. Just go and refresh it, and these are the outbound rule sets. ठीक है, तो ये आपकी किस तरीके की फायरवॉल कहलाती है? होस्ट बेस्ड फायरवॉल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट होती है आपकी हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या होती है? अ हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इज अ पेरिफेरल व्हिच इज हैविंग अ सिस्टम बॉक्स with a processor and giving us a configurational panel and having more advanced features from a software based firewall. यहाँ पे क्या है कि हम एक हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल का यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। ऊपर वाले जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है उसे होस्ट बेस्ड फायरवॉल बोलते हैं, एंड हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल को हम बोलते हैं नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। ठीक है, तो ये राउटर से पहले लगाई जाती है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, जबकि जो होस्ट बेस्ड फायरवॉल होती है वो राउटर के बाद लगाई जाती है, यानी सिस्टम से पहले आपकी काम करती है। ठीक है, तो इस केस में हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल एक पेरिफेरल डिवाइस है जस्ट लाइक अ राउटर व्हिच इज हैविंग अ सिस्टम बॉक्स। एक आपके लाइक जैसे कि आपका राउटर का एक डब्बा होता है, बिल्कुल वैसे स्विचेस टाइप के होते हैं ये, and with a processor by giving us a configurational panel and having a more advanced feature। और इसके पास एक configurational panel होता है जिसमें advanced features होते हैं from a software based firewall, जो कि आपके software based firewall से काफी हद तक advanced होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपकी जुनिपर की फायरवॉल आती है, सोफेसिस की फायरवॉल आती है, इंडियन फायरवॉल आती है, या फिर आपके सिस्को की फायरवॉल आती है, फोर्टिनेट की फायरवॉल्स आती है ना। तो इफ आई एम गोइंग एंड सी द फायरवॉल किसकी, फोर्टिनेट। नाउ लुक एट हियर, ये दिख रहा है आपको, ये फोर्टिनेट की फायरवॉल है गाइस। कैसी है ये? नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल है, जो कि एक हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल भी कहलाती है। क्लियर? ठीक है सर। ओके, अब देखते हैं जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसको। A firewall that is installed on a computer, and it protects that computer only and nothing else. So for example, later versions of Microsoft operating systems come pre-packaged with a host-based firewall, and you can see that example here. And there are also third-party host-based firewalls that can be purchased and installed on a computer. So for example, Zone Alarm, which is a popular third-party host-based firewall. And also a lot of antivirus programs will have a built-in host-based firewall. And another type of firewall is called a network-based firewall. A network-based firewall is a combination of hardware and software, and it operates at the network layer, and it is placed between a private network and the public internet. But unlike a host-based firewall, where it only protects that computer, a network-based firewall protects the entire network. And it does this through management rules that are applied to the entire network so that any harmful activity can be stopped before it reaches the computers. Now, network-based firewalls can be a standalone product, which is mainly used by large organizations. And they can also be as a built-in component of a router, which is what a lot of smaller organizations rely on. Or they can also be deployed in a service provider's cloud infrastructure. Now, a lot of organizations will use both network-based and host-based firewalls. They will use a network-based firewall to protect the entire network as a whole. And they will also use host-based firewalls for their individual protection for their computers and servers. And by doing this, it'll ensure maximum protection. Because if harmful data just so happens to get past the network firewall, the host-based firewalls on each computer will be there to stop it. So thank you everyone for watching this video. So guys, clear हुआ? फायरवॉल काम करती है? जी सर, हो गया है ना। तो आपने जो लास्ट टाइम अपने उसमें पढ़ा होगा CH के अंदर, उससे तो कुछ ज्यादा ही सर में आया होगा। चलो एक और है टाइप्स ऑफ फायरवॉल की, लेट्स सी वन मोर। Hey there, I'm Natasha, and my specialty is making all your app building dreams come true.
Hey guys, this is DG. Today we are going to understand different types of firewalls and decide which firewall will best suit you as per your implementation environment. So let's start. ये वीडियो आपको बताएगी कि आपको कौन सी टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स कितनी होती हैं, प्लस आपको कौन सी फायरवॉल नेटवर्क के ऊपर बेटर तरीके से आपको अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, protect our computers from internet hackers. Internet hackers can steal our bank details from our computers and can reduce our bank balance from thousands of dollars to zero within seconds. So, firewall is must in a computer or in a computer network. There are three types of firewalls: packet filtering firewall, application or proxy firewall, and hybrid firewall. Before starting with firewall types, you should know what are data packets. When we want to download a file of size say 200 MB from internet, then we will not receive the entire 200 MB data at once, but we will receive small packets, say 5 MB every second. Some of the part of this 5 MB packet is occupied with information like which computer is sending the data, which computer is receiving the data, etc. The remaining portion of this 5 MB packet contains the part of the actual data that we want to download. So, part of the actual data plus some information together forms a data packet or IP packet, and this part of actual data is called payload. Now, we can start with firewall types, starting with packet filtering firewall. Suppose I am downloading a file from internet. When the data packet arrives in packet filtering firewall, it only checks the sender's and the receiver's IP address and the port number present. अब आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आएगा कि जो भी आप डेटा पैकेट सेंड करते हो, आपने शायद सीएच के अंदर या नेटवर्किंग पार्ट के अंदर अगर आपने पढ़ा है कि जो आपके डेटा होता है वो पैकेट फॉर्मेट में ट्रेवल करता है इंटरनेट के ऊपर, और वो पैकेट फॉर्मेट डिफरेंट बाइनरी फॉर्मेट के सेगमेंट्स को ट्रेवल कराते हैं, राइट। तो ये जो 55 MB के है ना, दीज आर ऑल द सेगमेंट जो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं किसके 200 MB के डिवाइडेशन पार्ट में। तो इसमें आपको उस समय बताया गया होगा कि पोर्ट नंबर जब भी डेटा पैकेट सेंड करता है तो वो आपके यूज करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक सेंडर, रिसीवर एंड ऑल डिटेल्स। तो वो ऑल डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे क्लियर होगी। In the data packet, the rules written in a list called access control list are used for data packet verification. If everything is okay, then the data packet is allowed to pass through packet filtering firewall and then to my computer. But what is port number? Actually, these are some digits written after IP address separated with a colon and are used for the successful data packet transfer. The packet filtering firewall is already present in internet routers, so they are the cheapest and the quickest way to implement. The only limitation of packet filtering firewall is that it do not check the data portion, that is payload of the data packet. So a hacker could send some malicious data packed in this payload section. Hence, packet filtering firewalls provides low security. The second one is application or proxy firewall. Let us understand it with an example. Suppose your mom asked you to buy a pen from the market. You go to the shop, buy the pen, come home back and give the pen to your mom. Here, you had done the work that your mom wanted you to do without letting the shopkeeper know who actually wanted that pen. Same is the case with application or proxy firewall. Replace the shopkeeper with internet, your mom with personal computer, and yourself with proxy firewall. Like, you did not let the shopkeeper know that your mom was the one who actually wanted that pen. Similarly, proxy firewalls do not let the internet know which computer actually wants to visit the requested website. That is, proxy firewalls hides us from attackers in internet. Let us understand this whole process. User enters the website www.facebook.com in the web browser. Proxy firewall receives the request and forwards that request to internet. The web server in internet receives the request and responds back to the proxy firewall with the requested information. The proxy firewall receives the information and forwards it to the original client for his viewing pleasure. In this whole process, web server thinks that proxy firewall is the one who wants to visit www.facebook.com. That is, proxy firewalls do not let the web server know the origin of the request. So, proxy firewalls protect us from the potential attackers in internet by not disclosing our computer's identity, or I should say, by not disclosing our computer's IP address. Since application firewalls also check the payload of the received data packet, so they are generally much slower than the packet filtering firewalls.
Third is hybrid firewall. Hybrid firewalls combine packet filtering firewall and application firewall in series to enhance the security. If they are connected in parallel, then the security of the connection will be reduced to the parameters defined by packet filtering firewall. That is, application firewall will be of no use if the two firewalls are connected in parallel. For this reason, hybrid firewalls use packet filtering and application firewall in series. As a result, hybrid firewalls provide best security compared to packet filtering and application firewalls. Now, which firewall will be best for us will depend on its implementation environment. For example, packet filtering firewall will be best for low-risk environment like low-risk job. Application firewall will be best for medium-risk environment like universities. And hybrid firewalls will be best for high-risk environment like hospitals, whose database contains important reports of the patients. Now, you can choose a firewall as per your need. If you have learned something from this video, then please like this video. समझ में आया guys? Types of firewalls. जी सर। बढ़िया। So आज के लिए इतने ही रखते हैं. Then we will continue tomorrow and कल देखते हैं अपना